आ गए नोएडा 137 में न्यू चंपारण हांडी मटन एंड चिकन और जानते हैं कैसे बनाते हैं और क्या है खास बात। बताइए सर। आपको यहाँ स्पेशल बिहार का मटन एंड चिकन मिलेगा जो कि स्पेशल मिट्टी के बर्तन में बना होता है। ये एनसीआर में पहला ऐसा शॉप है जहाँ की हम लोग यहाँ बनाते हैं, सामने में बना के खिलाते हैं। इसमें एकदम नेचुरल टेस्ट आएगा, फ्रेश मटन होता है, फ्रेश चिकन होता है और सामने में बना के दिया जाता है। गरम गरम तावे की रोटी आपको मिलेगी, फिर चावल मिलेंगे, उसके साथ मिनरल वाटर मिलेंगे एंड यू कैन हैव अ बेटर टेस्ट देन एनीवेयर एल्स। वाओ सर, आप प्रोसेस दिखा सकते हैं कैसे बनाते हैं? Yes, we can show you the process. First we prepare all ingredient at home. It will be all fresh masala spices that is made in home, and thereafter here we prepare in a soil pot that is called handi. Show me. We'll show you. Wow. See this. You can show here. This is our handi. Wow. And here we minute to get properly cooked. So you can have a fresh taste and natural taste of. So a what's Champaran the meat. overall time, total time for chicken to? Total time it takes minimum 45 minutes to get cooked For properly. chicken? Yes, for chicken. And for mutton? 10 or 15 minutes more than the chicken. And what is the price? Price is a very nominal. It is a 1400 per kg for 1 kg of mutton with handi and without handi. We also deliver at home if prior advance order is given, and for a chicken it is 800 rupee per kg. Wow, sounds very awesome in terms of price. Timing is between 7 to 11 o'clock. Thank you so much sir. What's your name? My name is Suman, and this honor my brother and sister. One is Suman Kumari, other is Vijay Kumar. Thank you so much sir. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके you and I very will much. definitely Please recommend visit it. all my friends and family and everyone who's watching this video to do visit this place and try out new Champaran Handi Mutton and Chicken at a very nominal price. Location is Noida sector 137, right opposite the corporate building that you see here. Trust me, this is going to be an awesome experience. Thank you so much. Signing off from Sab Kuch Yahan.